this way we can say like M1 D1 H1 equals to M2 D2 H2 when the work is same. Understood? M means number of men, D means number of days, H means hours per day. Understood? So write down a question. Ten men working 6 hours a day for 5 days, plow a field for 5 days, plow for 5 days, plow P-L-A-U-G-H, plow a field. Then how many men working 2 hours a day for 3 days plow the same field? इसका मतलब क्या है? वर्क इज सेम. तो विच फॉर्मूला यूज? M2 D2 H2. कुछ लोग आपके घर में कुछ बनाने के लिए लोग आएंगे मकान, तो कुछ घंटे काम करेंगे, पर डे का एक फिक्स रहेगा, इतने करेंगे और इतने दिन तक करेंगे, तो कितने काम होगा ना. 10 मीन एक आदमी 6 घंटे काम कर रहा है पर डे, 5 दिन में कितना काम करेगा? 1 into 6 into 5, इतने आवर्स काम करेगा. M1 D1 H1 equals to M2 D2 H2. What is M1? 10 men. Yes. 6 days, 6 hours per day मैंने बोला था. It will 5 and then 6. आपको men निकालना है and days are 2 hours. So you have to cancel like this. 3 2 ja. So men, how much it will be? 50 men required. How many men required? Understood? Generally, have we gone to this Akshardham temple? Anyone has? If you'll go to there, वहाँ पे लिखा रहता है 2 करोड़, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, ध्यान नहीं है मुझे. 2 crore hours, man hours day. आप suppose one man is working for 10 hours a day for 5 days, तो कितना काम किया इसने? 50 man hours day. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वहां पर वो लिखा हुआ, ये मत सपोज कर लेना कि वो 2 करोड़ लोगों ने काम किया. They have done so many people for several days and every day some hours of day, and that has been written when you are entering into it. Big hall is there, तो उस big hall में it is some kind of information has been given. तो इसका मतलब यदि आप अगले 6 दिन 10 घंटे पढ़ते हो तो योर व्हाट इज 60 men hours day. एक बंदे का 2 करेगा तो इट विल बिकम 120 man hour day. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे. तो आपका काउंट किस में होता है? लास्ट में आवर्स पे जाके काउंट होता है. अंडरस्टूड? इफ आवर इज आल्सो गिवन. अंडरस्टूड? सो हाउ मेनी men required to complete this field, to plow this field? 50. Write down the next. Is it okay? Very simple. Next one. 10 men working 8 hours a day. 10 men working 8 hours a day for 5 days
build a 60-meter wall, build a 60-meter wall then 20 men working 5 hours a day for 10 days will build how long wall? इसमें क्या है? Which formula you will utilize? Yes, M1 D1 H1 upon W1 because work is different. Yes, what is the answer? Huh? अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या दिया है. क्या था? Yes, 10 men 8 hours a day for 5 days and build a 60-meter wall. Yes, 20 men 5 hours 10 days, and then here it is. I said killer, so 0 0 cancel, and then 5 2s are, and then I said that 2 4s are, and 4s if will cancel it become 15. So 5 and 2 10 and into 15. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? This 10 will come 15 into, तो नीचे नीचे वाले भी इक्वल हो जाते हैं. Understood that? या आप डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, W2 this side 15 you have taken this side, it become 15 into 10 150. So how long wall it is? Okay. ये कैंसिलेशन इसलिए शो कर रहा हूँ कि यू कैन डू इट इजिली, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर दैट यू कैंसिल, सो आफ्टर दैट इट टेक्स टाइम, सो यू कैन सेव योर 4-5 सेकेंड एट लीस्ट बाय डूइंग दिस. अंडरस्टूड इट? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट डाउन. Simple question, it's a very simple once you understand. 5 Maruti Dzire work running 3 hours a day for 5 days consume 200 liters of diesel. ये डीजल क्या है?
work energy, work, understood? Then 10 Maruti Dzire, 10 Maruti Dzire running 5 hours a day for 2 days will consume how much diesel? Will consume how much diesel? हो गया? You got 800 upon 3, it means 266.66 liters. So what the question was? क्या था? 5 Maruti Dzire 3 hours a day for 5 days consume 200 liters. 10 Maruti Dzire 5 hours a day will consume how much? So I said that 5 cancel, 5 2s are cancel, and then W2 come this side, and then 200 into 4 become 800 upon 3, 266 upon 66. Clear? These are the liters, it is clear. So next one, समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? लेकिन कई चीज़ों के बेस्ड क्वेश्चन और भी होते हैं. I can't go for it. चलो करो, सारा ही नहीं आता है तब तक टफ ही रहता है. Write down the next. A contractor employee promised to complete a work in 60 days by employing 120 men. 120 men working 10 hours a day. Working 10 hours a day. But at the end of 45 days, he found that only 1/3 of the work get completed. कितना कंप्लीट हुआ? Just tell me how much work completed.
How much work completed? How many men are working? मैं आप लोगों को आसान बना रहा हूँ, यदि मैं छोड़ दूंगा तो आप लोग के लिए हार्ड बन जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ. How many men are working? Tell me. 120. And how much per hour they are putting? 10 hours. And how many days they have worked? And how much work completed? Very good. Clear? Then क्या last बोला मैंने? Only 1/3 of the work completed. Then how many extra men he will employ? Then how many extra men he will employ? To complete the work on time.